AutoCAD, which stands for the computer-aided design, is a widely used software application developed by the Autodesk for the creating of 2D and 3D drawing of models. It is employed in various industries including architects, engineer, construction, and manufacturing to design and document ideas efficiently. AutoCAD provides a versatile platform for the professionals to visualize, analyze, and communicate the design. User interface. You find the introduction in AutoCAD. User interface. AutoCAD feature a user-friendly interface with a menu toolbar and commands line options. The ribbon interface organizes tools and commands into the tabs for easy access. Drawing and editing tools. AutoCAD allow user to create a precise 2D drawings using the tools like the lines, circles, arcs, and rectangles, and many more things. There is a layout management. Layout helps organize and control the visibility of different elements in a drawing, and users can assign a properties such as color, line types, and line weight to the layers. Dimensioning and annotates. AutoCAD facilitates the accurate dimensioning of drawings, including the linear, angular, and radial dimensions. 3D modeling. AutoCAD supports 3D modeling, allowing the users to create a three-dimensional object and scenes. Solid modeling, surface modeling, and mesh modeling are among the 3D capabilities. Parametric constants. Parametric using the user can apply constants to maintain the relationship between the object, ensuring that the change in one part of the drawing are reflected throughout. And collaboration and data access. It's the property of AutoCAD which supports the various live format for the importing and exporting the drawing, enhancing the collaborations with other software applications. There is a customization. AutoCAD is highly customized, allowing user to create and use custom commands, scripts, and templates to streamline the workflow. Automations with the Autodesk, and many more. There is a document and printing option. AutoCAD provides the tools for creating details, documentation set, including the layout, plot, style, and printing options. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज रुपेश आदित्य और आप सुन रहे हैं यहाँ पर रुपेश आदित्य की आवाज़ में। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे ऑटोकैड को हम लोग ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑटोकैड डाउनलोड कर लेना है। ऑटोकैड डाउनलोड करने के लिए आपको ऑटोडेस्क कंपनी में जा करके पहले तो स्टूडेंट आईडी बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट आईडी बनाने के लिए आपको किसी भी एक एड्रेस प्रूफ और अपने एज प्रूफ दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ वो इसे मांगते हैं ताकि आप स्टूडेंट है कि नहीं वो उनको चेक करना होता है। डोंट माइंड, आप अपने स्कूल की कोई भी आईडी या फिर अपना आधार कार्ड को भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट में जाना है सबसे पहले तो आप चले जाइए स्क्रिप्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि ऑटोकैड एजुकेशन एंड स्टूडेंट एक्सेस लिखा होगा। ऑटोकैड एजुकेशन एंड स्टूडेंट एक्सेस में जाने के बाद अगर आपको ऑटोकैड के सारे प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने हैं तो सबसे पहले आपको एक स्टूडेंट आईडी बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ पर जाकर के अनलॉक एजुकेशनल एक्सेस टू द ऑटोडेस्क प्रोडक्ट में जाकर के क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद वहाँ पर अपने डिटेल्स और एक जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उनको देना है और आपको वेट करना है। ये 48 आवर्स के अंदर में रिन्यू हो जाता है और आप चाहें तो फिर यहाँ पर साइन अप करके साइन इन करके आप कोई भी सही इनमें से जुड़े कोई भी सॉफ्टवेयर को 30 डेज के लिए फ्री स्टूडेंट एक्सेस पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा रेविट एंड फ्यूजन 360, AutoCAD फॉर मेक, AutoCAD वेब, inventors, and many more 3D Max, Maya. These are the designing tools which is used for designer and infrastructure architecture, and AutoCAD is used mostly for electronic engineer, civil engineer and mechanical engineer, while the Autodesk CFO Unlimited बहुत सा चीज़ें जैसे सिविल 3D के दो आप बहुत सारे आपको वेरिएंट मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर सब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ऑटोकैड का जो सबसे न्यू सॉफ्टवेयर जो है वो है AutoCAD 24 मीन्स 2024, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने प्री इंस्टॉल कर रखा है ऑटोकैड। तो सबसे पहले इसको बंद करते हैं और आपको ओपन करके मैंने दिखाता हूँ आपको AutoCAD 2024। It takes some time to open, but wait until the GPU and CPU processor will execute all the data and all the extensions of AutoCAD. So, AutoCAD identity manager error report. Okay, just cut it down.
Now you can clearly see that this is the graphical user interface. And if you want to draw some new project over AutoCAD 2024, just go to the home and insert annotate. If you want to access all these ribbon element, you have to create a workspace. So firstly, just go to new, and you find that you are entering into the workspace. Here we are working in the 2D workspace. Okay. So this is our workspace. This is called the ribbon, and in the ribbon you find that there is a many tabs in around the ribbon, which is home, insert, annotate, parametric, views, manage, outputs, aliens, collaborators, express tools, features, and many more. In the home tools you find the line, polyline, circles, arcs, and many more, just like rectangles and polygons. Okay, so you have many more tools just like move, copy, trace, rotate, mirror, scale, create, trim, erase, and offset. Many annotate, just like a multiple line text. You can enter the text whatever you want to write over it. You find the linears and leaders, which is generally dimensioning tools, and you find the layers, means you have to create multiple lines of different color, of different size. Means you if you can create the dotted lines or a continuous line or zigzag lines by selecting this property, and you have to you have found that you can insert the blocks. Blocks are the element by which you can save a huge element, and you have to use it multiple times. Just like you create a chair and you save it as a block, then you can use it multiple times in your project. Okay, there is this property and many more things in the home tab. There is insert tab. You find many many elements in the insert tab, many options in the insert tab. You find the annotate and parametric forms. You find the views, manage, outputs, add-ins, and collaborate. You can collaborate with your partners. You can, yes, you should collaborate with your partner. There is an express tool, there is a feature save, and many more things. Okay. So this is the interface of AutoCAD 2024.